Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the types of symbiosis. So let's move to the board. So dear students, today we will discuss symbiosis and its types. तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में सिम्बायोसिस के वाले से कुछ सरसरी सी बात हुई थी थोड़ी सी लेकिन आज हम इसकी डिटेल में जाएंगे इंशाल्लाह। सो सिम्बायोसिस को पहले डिफाइन करते हैं। व्हाट इज सिम्बायोसिस? So symbiosis, dear students, it is a relationship between two different species which live together for a longer or shorter duration. So this kind of relationship is known as symbiosis. और ये स्टूडेंट्स इसकी 3 टाइप्स हैं जो कि हम अपने सिलेबस में कवर करेंगे और आज हम इसको डिस्कस करने लगे हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ सिम्बायोसिस Dear students, symbiosis itself, it is a type of interaction. जैसा कि हमने इससे पहले predation पढ़ा, competition पढ़ा. So it is a third category of interaction between various species, and it is further divided into 3 types. The first type is parasitism. So dear students, it is a type of symbiosis in which the smaller organism, which is called as parasite, derives food and shelter from the larger which is called as host organism. तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये 2 डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान एक ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें एक छोटा ऑर्गेनिज्म है और एक बड़ा ऑर्गेनिज्म। ये प्रीडेशन है उसके बिल्कुल उलट होता है इस तरह से, जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्रीडेशन में जो बड़ा एनिमल होता है वो या बड़ा जो ऑर्गेनिज्म होता है वो प्रीडेटर होता है, जबकि जो छोटे साइज का जो ऑर्गेनिज्म होता है वो प्रे होता है, यानी कि वो खाया जाता है, वो विक्टिम होता है। लेकिन पैरासाइटिज्म में जो एक्चुअली नुकसान पहुंचा रहा है वो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है और जिसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो larger organism है. So it is a type of symbiosis in which the smaller organism, means the parasite, derives food
and shelter from the larger organism and in turn, और बदले में उसको क्या दे रहा है? harms it, उसको नुकसान भी पहुंचा रहा है और आमतौर पर नुकसान पहुंचाता है बीमारी की शक्ल में। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? और इससे पहले हम फर्दर मूव करें इसकी कैटेगरीज में, पैरासाइट को एक दफ़ा डिफाइन कर लेते हैं। पैरासाइट आप ग्रेड 9 में भी पढ़ चुके हैं। सो पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म which depends and lives in a host for food usually and shelter, and in turn it harms the host. So dear students, that is a parasite. और जो पैरासाइट और होस्ट के दरमियान में जो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दिस इज टर्म्ड एज पैरासाइटिज्म। इनका आपस में जो इंटरेक्शन है, दिस इज टर्म्ड एज दिस फिनोमिना और दिस मैकेनिज्म और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पैरासाइटिज्म। डियर स्टूडेंट्स, पैरासाइटिज्म जो है इसकी फर्दर हम दो तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। टाइप्स ऑफ parasite. So two categories. Number one, on the basis of duration, यानी how many time it takes to depend on the host, so उसके behalf के ऊपर, and number two, on the basis of location, so where it gets its food, either inside or either outside the host. So according to the basis of duration, there are two kinds of parasites: temporary parasites and permanent parasites. इसी तरह से dear students, on the basis of location, there are further divided into two categories: ectoparasite and endoparasite. तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब इनकी ज़रा डिटेल में चलते हैं एज पर आवर करिकुलम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। नंबर वन इज द टेम्पररी पैरासाइट। सो डियर स्टूडेंट्स, टेम्पररी पैरासाइट नाम से ज़रा जाहिर है कि ये वक्ती तौर पर अटैच होगा अपने होस्ट के ऊपर और उसमें से खुराक हासिल करेगा और फिर यहाँ से चला जाएगा। द टाइप ऑफ पैरासाइट which attach to host for a shorter duration, थोड़े वक्त के लिए, थोड़े टाइम के लिए आएगा, अपनी खुराक को हासिल करेगा और वहाँ से रिमूव हो जाएगा, वहाँ से चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो,
For example, like aphids. So dear students, these are another example, leech. So these are the examples of temporary parasites. ये वक्ती तौर पर अपने होस्ट के बॉडी के साथ अटैच होती हैं। वहाँ से जैसे कि मॉस्किटो के साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा, अगर नहीं तो सुना होगा कि वो स्किन के ऊपर आकर अटैच होता है, वहाँ से ब्लड सक करेगा और फ्लू अवेज, वो वहाँ से उड़ जाएगा। सो दैट काइंड ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड एज टेम्पररी पैरासाइट। दूसरी कैटेगरी जो कि ड्यूरेशन की बेस के ऊपर है, दैट इज परमानेंट पैरासाइट। तो इसके नाम से जाहिर है डियर स्टूडेंट्स, परमानेंट मीन्स इट इज द टाइप ऑफ पैरासाइट which cannot live without a living host। यानी कि ये होस्ट की बॉडी के अंदर ही रहेगा, इसके बाहर नहीं जा सकेगा, इसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? इसके एग्जांपल्स में फॉर एग्जांपल most disease causing bacteria, the disease causing bacteria, they are permanent parasites. For example, like the mycobacterium, tuberculi. This is the bacteria which is responsible for causing, it causes pulmonary TB। टीबी का नाम सुना आपने, ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। तो जब तक आप इसको एंटीबायोटिक के जरिए ख़त्म नहीं करेंगे, इसको मार नहीं देंगे, ये बॉडी से निकलने वाला नहीं है। सो मोस्ट डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया दे आर परमानेंट पैरासाइट्स। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, and it is important regarding MCQs, all viruses, जितने भी वायरस हैं, they are permanent parasites। और डियर स्टूडेंट्स, जो परमानेंट पैरासाइट है, इसके लिए हम एक और नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, which is like it is the terminology which is used especially for the viruses. Viruses, they are called as the obligate intracellular parasites। Yes, dear students, so they are obligate. Obligate means it is compulsory for them to, intracellular means within the cell. They have to remain within the cell, in the living cell, in order to survive, in order to reproduce. और इसी तरह से dear students, दूसरी category, that was the first category which was based on time duration. उसके एतबार से दो types. Now on the basis of the location. So on the basis of location, they are further divided into two types. Number one, endoparasite and ectoparasite। Yes, dear students, endo means, पहले इसके लफ्ज़ी मतलब पे आते हैं। endo means inside and ecto means outside। So it is understood from their names that endoparasite, it is a type
of parasite which lives inside the host, जो होस्ट के अंदर रहेगा, उसकी बॉडी के अंदर, उसके ऑर्गन्स के अंदर, उसके टिश्यूज के अंदर, उसके सेल्स के अंदर रहेगा, दैट वेरी काइंड ऑफ parasite is called as endoparasite. For example, Ascaris, for example, like the tapeworm. टेपवर्म ये बिल्कुल फ्लैट होता है, टेप की तरह का फ्लैट होता है, और आपने सुना होगा ये बच्चा खाता बहुत है पर इसे लगता कुछ नहीं, लगता है इसके पेट में कीड़े हैं। तो वो जो पेट में कीड़ों वाली बात हो रही होती है, दैट इज रिगार्डिंग द टेपवर्म्स। वो टेपवर्म होते हैं जिसको हम पंजाबी में मलापे भी कहते हैं। सो दे आर एक्चुअली द टेपवर्म्स। सो टेपवर्म, एस्केरिस, एंट अमीबा, हिस्टोलाइटिका, this is an amoeba which causes dysentery. ये इंसानों के अंदर डायजेंट्री कॉज करता है। और डायजेंट्री क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? डायजेंट्री जब लूज मोशंस के साथ, जब ये इन्फेक्शन कॉज करता है तो तब लूज मोशंस के साथ ब्लड भी आ रहा हो तो आमतौर पर दैट इज टर्म्ड एज डायजेंट्री। और उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म है दैट इज एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। और इसी तरह से एक और एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, इसका नाम तो आपने सुना, बल्कि आपने पढ़ा भी इन द प्रीवियस ग्रेड इन द चैप्टर नंबर 2, जब आपने मलेरियल जो साइकिल पढ़ा था, मलेरिया के हवाले से सारी हिस्ट्री पढ़ी थी, हिस्ट्री ऑफ मलेरिया इन एज पर अ बायोलॉजिकल केस, तो वहाँ पर आपने प्लाज्मोडियम के हवाले से पढ़ा था। इट इज़ अ पैरासाइट विच इज़ प्रेजेंट इन द फीमेल एनोफिलिस। और फीमेल एनोफिलिस जो होती है जब वो ब्लड सक करती है तो उस दौरान ये ह्यूमंस के अंदर उसको प्लाज्मोडियम को इंजेक्ट कर देती है एंड इट कॉजेज मलेरिया, द प्लाज्मोडियम। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एंडोपैरासाइट्स। एक और एग्जांपल बता देता हूं, पिन वर्म्स। पिन वर्म्स ये भी एक वर्म की टाइप है जो कि आमतौर पर छोटे बच्चों में ज़्यादा मीठा खाने की वजह से जो है उनको देयर इज़ एनल इचिंग, ठीक है, तो वो बच्चे रात भर सो नहीं पाते, फिर उनकी जो डाइट है वो इफेक्ट होती है, ऑन एंड ऑन। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, एक्टोपैरासाइट, इट इज़ अ टाइप ऑफ पैरासाइट which lives outside the body of host, अपने होस्ट की बॉडी के बाहर रहता है। और इसकी एग्जाम्पल्स लाइक मॉस्किटो, बाहर आए और बाहर से ही, और मॉस्किटो में डियर स्टूडेंट्स आप मेंशन कर देंगे फीमेल एनोफिलिस, क्योंकि इंसानों को काटती फीमेल ही है, और आपने पढ़ा था वो क्यों काटती है, बिकॉज शी नीड्स द ब्लड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ हर एग्स। इसी तरह से द लीचीज, जिसको हम उर्दू में कहते हैं जोंक, इस तरह से उनकी बॉडी होती है, और ये आम तौर पर पानी में भी रहती है और खुश्की में भी रहती है। ये पुराने वक्तों में इस्तेमाल किया जाता था बॉडी के बाहर अटैच करके, और वहाँ से एक कंसेप्ट था कि जो डिजीज़ कंडीशन, जो डिजीज्ड ब्लड होता है उसको सक कर लेती है, जोंक कहते हैं उसको उर्दू में, लीच। और इसी तरह से देयर इज अनदर एग्जांपल लाइक लाइस, जो जुएँ होती हैं वो भी सर स्किन के हमारे यानी सर के बाहर ही अटैच होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर नहीं अटैच हो पाती। इसी तरह से टिक्स, माइट्स, दीमक वगैरह, ठीक है, फ्लीज, जो पिस्सू होते हैं, ये ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टोपैरासाइट। और डियर स्टूडेंट्स एक और चीज़, ये तो हमने सिर्फ बात की इनके हवाले से, एक और एग्जाम्पल भी है, दैट इज़ अ प्लांट, जो कि प्लांट के अंदर भी पैरासाइट्स होते हैं। उसकी एग्जाम्पल आई एम राइटिंग ओवर हेयर इन दिस स्पेस।
So there is a plant by the name of Cuscuta, or it is also called as dodder. This is a parasitic plant जो कि अपने होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है. एक प्लांट के इसका होस्ट भी प्लांट ही होता है और ये उसके अंदर अपनी स्पेशल ब्रांचेस कॉल्ड हस्टोरिया ये उनके अंदर इंसर्ट करता है एंड सक्स द फूड. और आहिस्ता आहिस्ता उससे क्या होगा कि प्लांट होता है वो जिस हिस्से में ये अटैच होता है वहाँ से वो डैमेज होना शुरू होता है, वहाँ से उसकी ग्रोथ रुक जाती है और अल्टीमेटली इट कॉजेज डिजीज टू द होस्ट. सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे म्यूचुअलिज्म को. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.